Hello friends, today we are heading towards Pahalgam from Gulmarg. On the way to Pahalgam, we stopped at Gulmarg. The distance between Gulmarg to Drung waterfall, which is located in Gulmarg, is 16 kilometers and it takes around 40 minutes. The distance between Drung waterfall to Pahalgam is 133 kilometers and it takes around 3 hours to reach. Here in Jan Sweets, we tasted some delicious cookies and savories, which was yum, and this is also a very famous bakery in Gulmarg. Drung waterfall, which is located in Gulmarg, is a beautiful tourist spot, and Drung is also a very small village. But unfortunately, the waterfall was closed, so we could not visit it. दो महीने लगते हैं और ज्यादा से ज्यादा 6 साल लग जाते हैं। डिपेंड करता है नंबर ऑफ नॉट्स इन कारपेट और साइज के ऊपर। नंबर ऑफ नॉट्स ही है जो कारपेट को सस्ता या महंगा बनाते हैं। जब हम कारपेट बनाते हैं वी हैव टू यूज 4 नंबर ऑफ टूल्स फॉर मेकिंग देम। पहली चीज होती है ये ग्राफ ऑफ ए कारपेट। जैसे आपने म्यूजिशियंस के नोट्स देखे हैं उसी तरह कारपेट यूर के नोट्स होते हैं। ये कोई लैंग्वेज नहीं है। अच्छा। ना हिंदी है, ना संस्कृत है, ना पर्शियन है, ना कश्मीरी। जी, these are just codes. This is known as the language of a carpet weaver. या इसको हम कहते हैं लैंग्वेज ऑफ कलर्स। यहाँ से समझ आता है कौन से रंग का धागा यहाँ बेस ऑफ द कारपेट में कौन से थ्रेड के बीच में डालना है। अच्छा। इसके अकॉर्डिंग कलर्स चेंज करते जाते हैं, जो डिजाइन है वो इटसेल्फ क्रिएट हो जाती है। बट ये जो आप ग्राफ मेरे हाथ में देख रहे हैं ये पूरे कारपेट का नहीं होता। एक पूरे कारपेट के लिए इस तरह के अप टू 100 पेपर्स यूज किए जाते हैं। अच्छा। पहला ये होता है। दूसरा होता है हमारा नाइफ, कर्व्ड नाइफ। इट्स इज शार्प फ्रॉम वन साइड, ब्लंट फ्रॉम द अदर, बट हैज टू बी यूज्ड फ्रॉम बोथ साइड्स। तीसरा होता है हमारा ये मेटालिक कॉम, या इसको हम मैजिक कॉम भी कहते हैं, क्योंकि यही चीज है जो कारपेट को महंगा या सस्ता बनाती है। और चौथा होता है हमारा फ्लैट सीजर, जो नॉर्मल सीजर से थोड़ा सा डिफरेंट। In between, we crossed some beautiful mustard fields and saffron fields as well. But March was not the season for saffron, so we were unable to see any saffron. Kawa is a fragrant mild tea made with whole spices, saffron,
almonds, and originally from the Kashmiri cuisine. A must try one. Kashmir is also famous for its dry fruits like walnuts, saffrons, almonds, apricots, cranberries, raisins, blueberries. But again, here also you have to bargain a lot because prices differ in different places of Kashmir.